कोरोना गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों और व्यापारियों पर वीएमसी द्वारा कार्यवाही करते हुए सील लगाया जा रहा है। इस मामले वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन ने डिप्टी म्युनिसिपल कमिश्नर को आवेदन दिया। पिछले कई दिनों से कोरोना संक्रमण रोकने के भागस्वरूप महानगर पालिका द्वारा कड़ी कार्यवाही करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर कार्यवाही की जा रही है। इस मामले शहर के व्यापारियों का मंडल वडोदरा व्यापार विकास एसोसिएशन वीएमसी कार्यालय पहुंचा और मामले पर आपत्ति जताई। અમે સમગ્ર વડોદરા વેપારી વિકાસ એસોસિએશનના 70 એસોસિએશનો મારી સાથે સામેલ છે। એના અમે લોકોએ 5 જણ વેપારી વડોદરા વેપારી 35,000 દુકાનો અને 70 એસોસિએશન વચ્ચે અમે અહીંયા આવ્યા હતા। કારણ કે કોરોના ટાઈમમાં દિવાળીના ટાઈમમાં પબ્લિક બહુ બહાર નીકળી પડી, એના હિસાબે આ લોકોએ કોરોનાનો આરોપ વેપારી ઉપર મૂકી દીધો। કારણ કે કમિશનરશ્રીએ ઓર્ડર કર્યો કે વેપારી લોકો અને મોલવાળા લોકો જો કોરોનાનું ધ્યાન ન આપે, ડિસ્ટન્સ ધ્યાન આપે તો એને દુકાનો સીલ કરી દો। પણ દુકાનો સીલ કરવાનું કે કારણ કે તમે બહુ તો એને ફાઇન લઈ શકો। અને શહેરમાં તમે જુઓ, આ માકે નીચે તમે હાલત જુઓ ને કેવી હાલત છે। આ શહેરમાં બધે જુઓ, કમાટી બાગમાં જુઓ, 50% લોકો માસ્ક નથી પહેરતા। વેપારી દરેક વ્યવસ્થા કરી છે, બધું જ કરેલું છે, છતાં પણ વેપારીઓને હેરાનગતિ ખૂબ વધી ગઈ, ઓવાપો બહુ ખરાબ થઈ ગયો અને વેપારી લગભગ 40-50 દુકાનો સીલ પાડી દીધા। એ હિસાબે આજે અમે કમિશનરશ્રીને આવેદનપત્ર 3 પાનનું આવેદનપત્ર અમે આજે આપ્યું છે, બધી વિગતવાર લખી છે। આસિસ્ટન્ટ કમિશનર સાથે અમારે વાતથી બહુ સારો રિસ્પોન્સ મને આપ્યો અને કહ્યું કે આવતીકાલથી અમે લોકો એની ધ્યાન આપીશું અને આવતીકાલથી સીલ મારવાનું બંધ કરવાની અમને બાંહેધરી આપી છે અને એ અમને અમારા પર વિશ્વાસ છે કે આવતીકાલથી સીલ મારવાનું બંધ થશે। જો નહીં થાય તો પછી આગળ અમે ઉગ્ર આંદોલન કરવાના છે। કોરોનાના કેસને નિયંત્રણમાં લાવવા માટે સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ, સેનેટાઇઝર, માસ્ક આ બધાનું પાલન સખત રીતે થઈ શકે એના ભાગરૂપે ઝુંબેશ રૂપે વડોદરા મહાનગરપાલિકા દ્વારા જે દુકાનોમાં આ જે કોરોના રિલેટેડ પ્રોટોકોલનું પાલન થતું ન હતું એવી દુકાનોને સીલ કરવામાં આવી હતી। એટલે આ વેપારી એસોસિએશન અને એના પ્રતિનિધિની મુખ્યત્વે રજૂઆત છે કે સીલ કરવાની કામગીરી છે એ બંધ કરવામાં આવે। કારણ કે કોરોનાના કારણે આપણે જાણીએ છીએ કે પહેલાંથી જ વેપાર ધંધાને ખાસ કરીને નાના દુકાનદારોને ખૂબ તકલીફ પડી રહી છે। તો એ સમગ્ર સમય દરમિયાન એ લોકોએ પણ ખાતરી આપી કે એમના તમામ વેપારીઓ દ્વારા આ કોરોના રિલેટેડ જે પણ પ્રોટોકોલ છે એ સોશિયલ ડિસ્ટન્સિંગ હોય, માસ્ક હોય કે સેનેટાઇઝર હોય એનું પાલન કરશે અને કદાચ ક્યાંય કોઈ ના કરે તો એના પાસેથી આર્થિક દંડ લેવામાં આવે। પણ જે दुकान सील करवानी कामगीरी થઈ રહી છે એ બંધ કરવામાં આવે એમની રજૂઆત હતી। शहर के पॉश इलाके अकोटा में आर्किटेक्ट डिजाइन के नाम पर चलने वाला ऑनलाइन सेक्स कॉल सेंटर का पर्दाफाश हुआ है। शहर के अकोटा इलाके में पीएफ ऑफिस निकट श्री रेसिडेंसी हाउस में इंटरनेट के जरिए चतुर बातें वेबसाइट चलाई जा रही थी, जिसमें वर्चुअल लाइव सेक्स कॉल सेंटर का चलाया जाने होने का पर्दाफाश जेपी पुलिस ने किया है। इस मामले पुलिस ने कॉल सेंटर के संचालक और 2 लड़कियों को लाखों रुपए के मुद्दामाल के साथ गिरफ्तार किया है। रे डिजाइन वर्ल्ड नामक आर्किटेक्ट डिजाइनिंग कंपनी चलाने वाले नीलेश गुप्ता ये ऑनलाइन सेक्स रैकेट चलाते थे, जिन पर अब कानूनी कार्यवाही की जा रही है। 22 તારીખે સાંજે જેપી રોડ પોલીસ સ્ટેશનને રે ડિઝાઇન વર્લ્ડ નામની એક ફાર્મ છે જો આર્કિટેક્ટ ડિઝાઇનિંગના કામ કરે છે ત્યાં ઓફિસમાં અને જો રે ડિઝાઇનના પ્રોપ્રાઇટર છે તેમને ઘરે રેડ પાડવામાં આવી અને ત્યાંથી બહુ સારા આપત્તિજનક સામગ્રી અને વસ્તુઓ મળી, જેમાં જો રે ડિઝાઇન વર્લ્ડ કંપનીના માલિક પ્રોપ્રાઇટર છે નિલેશ ઇન્દ્રચંદ ગુપ્તા, બીજા એમી પરમાર છે। આ બંને જણા રે ડિઝાઇન વર્લ્ડ ફાર્મના ફ્રન્ટ તરીકેથી ઉપયોગ કરીને અને કંપનીની પ્રેમાઇસીસમાં જો બિલ્ડિંગ છે ત્યાં એક સેક્સે રેકેટ ચલાવી રહ્યા હતા। આ સેક્સે કોલ સેન્ટરમાં આ લોકો બહારથી કંપનીમાં કામ કરવાને નામે છોકરીઓને નોકરી ઉપર રાખતા હતા અને પછી આ છોકરીઓથી અલગ અલગ ઇન્ટરનેશનલ પોર્નોગ્રાફીની સાઇટો હોય છે તેમને ઉપર આની આઈડી બનાવીને ત્યાં વેબકેમને મારફતે લાઈવ ન્યૂડ ચેટિંગ કરાવતા હતા। આ લાઈવ ન્યૂડ વેબકેમમાં
છોકરીઓ સવેરેથી સાંજે બેસતી હતી અને જો વ્યુઅર્સની ડિમાન્ડ હોય આને મુજબ આને ટીપ મળતી હતી. આ ટીપના પછી નિલેશ ગુપ્તા વેબસાઇટથી ઇનકેશ કરાવતા હતા. આના એક પાર્ટ અમને પોતાને પાસે રાખતા હતા અને સેલરી તરીકેથી જો છોકરીઓ ત્યાં આના કામ ઉપર રાખેલી હતી આના 20,000થી 25,000 રૂપિયા મંથલી આપતા હતા. મોટા ભાગે બે વેબસાઇટ અત્યારે સુધી તપાસમાં જેના નામ બહાર આવ્યું છે, એક સ્ટ્રીપચેટ કરીને છે અને એક ચતુરબાતે છે. અત્યારે સુધી તપાસમાં જો બિટકોઇન વોલેટમાં કરન્સી હતી આમાંથી 1.5 લાખની આજુબાજુમાં બિટકોઇન કરન્સી અમને સીઝ પણ કરી લીધી છે. આરોપી બિટકોઇન કરન્સીને બિટકોઇન એક્સચેન્જ તરીકેથી ડોલરમાં કન્વર્ટ કરાવીને યા રૂબલમાં કન્વર્ટ કરાવીને પોતાની વાઈફને ટ્રાન્સફર કરતા હતા રશિયામાં અને આની વાઈફ પાછી NRI ખાતેમાં ટ્રાન્સફર કરતી હતી. આ તરીકેના ચેનલ અડોપ્ટ કરવાને કારણ બેન્કિંગ સિસ્ટમની રડારથી બહાર રહ્યું અને હવે પૂરા નેટવર્ક આના બહાર આવી ગયું છે. આમાં લગભગ મેક્સિમમ જો છોકરીઓ છે લોકલ હતી બરોડા અને આજુબાજુની, એક છોકરી સુરતની અને એક છોકરી યુપીની પણ હતી. ગુનાની તપાસમાં અત્યારે સુધી 11 લેપટોપ કબજેમાં કરવામાં આવેલ છે, એક મોબાઈલ, 2 ટીવી, 2 વેબકેમ, 2 વાઈફાઈના રાઉટર્સ અને આને અલાવા કુછ સેક્સ ટોયઝ પણ કબજેમાં લેવામાં આવેલું છે જેના उपयोग આ ગુનાના કામે થતા હતા. गुजरात में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते कई शहरों में रात्रि कर्फ्यू का ऐलान किया गया है, जिसके चलते शादी के आयोजनों में लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने शादी ब्याह के आयोजनों पर पाबंदी लगा दी है। रात्रि कर्फ्यू के चलते रात में होने वाली शादी के आयोजन रद्द किए गए हैं। वहीं दिन में भी 200 की बजाय सिर्फ 100 लोगों को ही शादी में शामिल किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। ऐसे में जिस घर में शादी हो उन्हें कई तरह की दिक्कतें उठानी पड़ रही है। ऐसे ही शादी वाले घर में आ रही दिक्कतों को परिवार ने VNM टीवी के साथ साझा किया। हमारे साथ इस वक्त दीपाली मौजूद हैं। दीपाली की कुछ ही दिनों में शादी होने वाली है। आइए हम बात करते हैं। दीपाली, अभी नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है और उसमें 200 लोगों से 100 लोगों की परमिशन है कि शादी में आ सकते हैं। ऐसे में कार्ड्स पहले ही दे दिए गए थे। अब क्या दिक्कतें आ रही हैं? गेस्ट आने शुरू हो गए हैं। हाँ, लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे गेस्ट जो आने वाले थे वो कैंसिल हो गए और बहुत सारी दिक्कत हो रही है। पहले भी हम वो परमिशन लेके आए थे 200 मेंबर्स की, बट अभी जो 100 मेंबर्स हो गए तो हमें बहुत दिक्कत हो रही है कि अभी अच्छा है कि हमें परमिशन मिल गई है, वरना अभी कुछ हम कर भी नहीं सकते। हमारे गेस्ट भी ज़्यादा हो रहे हैं, बट कार्ड्स भी सब बिक गए। फिर अभी हमें बहुत दिक्कत है कि हम सबको बुलाएं या सबको कैंसिल करें। कितने गेस्ट अभी आने वाले हैं और किस किस चीज़ की आपने परमिशन ली हुई है? गेस्ट तो बहुत कम हो गए, जितना हमने एक्सपेक्ट किया था उनसे तो बहुत ही कम हो गए, क्योंकि अब सब बाहर से आने वाले हैं तो वो भी डर रहे कि हम ऐसे टाइम में हम जाएंगे कैसे और निकलेंगे तो भी कर्फ्यू के टाइम पे हमें कोई भी रोक सके और वो तो बहुत भी दिक्कत हो सकती है। इसीलिए बहुत ही कम हो गए गेस्ट। तो दूसरी रस्में हैं हल्दी मेहंदी को लेकर, तो उसमें भी क्या क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस रखे जा रहे हैं और किस तरीके से सारे फंक्शंस को अरेंज किया जा रहा है? हाँ, मेहंदी तो आप देख रही हो और हल्दी में और हमने सब किसी गेस्ट को बुलाया ही नहीं है। सब हम घर में ही सब जो गेस्ट होंगे घर के ही वही है। और हल्दी में भी हमने मास्क सैनिटाइज़र कंपलसरी रखा है और सबको बताया कि सोशल डिस्टेंस का खूब ध्यान रखें। कोविड के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? सब सरकार के जो निर्णय है उसके साथ रहे, उसको सहकार दे और सभी शादियों में सोशल डिस्टेंस का ध्यान रखें, मास्क कंपलसरी रखें, सैनिटाइज़र रखें और हम सरकार को साथ दें। अभी अरेंजमेंट में 200 की जगह अभी 100 आदमी हो गए हैं, तो अभी सब जगह अकेले को दौड़ के सब मेरे को अरेंजमेंट करना पड़ता है क्योंकि मेरे पापा है नहीं और सब बाजू मेरे को अकेले को दौड़ के काम करना पड़ता है। तो अभी सब रस्में भी हमको सब
काटनी पड़ी है, कैंसिल करनी पड़ी है। अभी ये सब रात्रि 9 बजे तो टाइम कर्फ्यू का हो गया है, तो अभी रात को गरबे वरबे वो भी सब कैंसिल हो गया है। अभी वो कैटरस में क्या है कि अभी 2 दिन पहले ही मैंने सब एडवांस पैसे दिए हैं कैटरस में। न सिर्फ परिवार को बल्कि शादी से जुड़े लोगों को भी पाबंदियों के चलते समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर दीपावली को जो मेहंदी लगाने आई हैं वो भी मौजूद हैं, कृपा। हम उनसे बात करेंगे कि शादियों के सीज़न में अब जब नाइट कर्फ्यू है और कई शादियाँ कैंसिल हो गई हैं तो उन्हें ऐसे में कितना नुकसान हुआ है और किस तरीके से किस सेफ्टी प्रिकॉशंस के साथ वो ब्राइड्स को मेहंदी लगाती हैं। सेफ्टी प्रिकॉशंस मतलब हम लोगों को पहले तो देखना पड़ता है सामने वाला कि वहाँ पे कुछ पहले नहीं था ना कोविड किसी को, वो सब देखना पड़ता है। फिर हम लोग कॉर्न्स को भी सैनिटाइज़ करते हैं। हम खुद भी सैनिटाइजर्स लगा के और मास्क पहन के ही बैठते हैं सामने ब्राइड को मेहंदी लगाने। और ग्लव्स भी पहन सकते हैं, बट ग्लव्स के कंफर्टेबल नहीं रहता है, वो मेहंदी होते हैं ना तो कंफर्टेबल नहीं रहता है, सो हम ग्लव्स नहीं पहनते हैं। कोरोना की वजह से अभी कई सारे ऑर्डर्स आपके कैंसिल हो गए होंगे और ऐसे में आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? कोविड की वजह से हर साल बहुत सारे ऑर्डर्स होते हैं, बट इस साल सब कैंसिल, जो प्री बुकिंग्स होते हैं वो सब अभी कैंसिल हो गए हैं। और जो रस्म होती है, रस्म करते हैं, बड़ी सी रस्म होती है, उसमें बहुत ज़्यादा औरतें मेहंदी लगाती है, बट इस कोविड की वजह से अभी सिर्फ ब्राइड को ही है। और जो रस्म थी वहाँ उसमें भी हाँ 7-8 औरतें ही, मतलब बहुत कम लोग होते हैं, तो उसकी वजह से बहुत नुकसान होता है इसमें। वडोदरा रेलवे मंडल के 190 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर सामने आई है, लेकिन इस मामले रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी खेमराज मीणा द्वारा मामले को खारिज किया गया। मीना जी बताइए कि ये जो अभी एक इंफॉर्मेशन हमारे पास आई है कि 190 कर्मचारी प्रतापनगर रेल में पॉजिटिव पाए गए हैं कोरोना, ये इंफॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है? देखिए एक्चुअली क्या है कि किसी वजह से पता नहीं किसने ये रूमर चलाया है, लेकिन हमारी तरफ से यह है कि अगस्त से हम लोगों ने जो टेस्ट है, जो रैपिड टेस्ट और आर्टिफिशियल टेस्ट स्टार्ट किया है, तो तकरीबन हम लोगों ने 500 टेस्ट किए हैं। उसमें से अब तक मतलब अगस्त से अब तक 50-60 जो हमारे एम्प्लॉई है रेल फैमिली ये पॉजिटिव हुए हैं। तो टोटली वो रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। अब पता नहीं वो किस तरह से कहीं से रूमर ओके या फिर गलती से कहीं उन्होंने कुछ फिगर सोचा कि ये आज का है आपका है, कहीं दूसरी जगह से ओके, बट हमारी तरफ से क्लियर है, टोटली क्लियर है। मगर क्या आज किसी भी प्रकार के बहुत ज्यादा टेस्टिंग के लिए कर्मचारियों को ले जाया गया था, बुलाया गया था, उस वजह से ये आंकड़े बाहर आए हैं? क्या है वजह? नहीं एक्चुअली क्या है कि जैसे हमारा क्या है कि सिम्टम जैसे ही, क्योंकि हमारी ओपीडी भी चलती है ऑलरेडी, हमारे कोविड हॉस्पिटल यहाँ पे इसको वो कर रखा है, तो इसमें तकरीबन 60 के करीब बेड हैं। तो अभी क्या है कि तकरीबन 32 करीब पेशेंट हैं यहाँ पे। तो हमारी जैसे ही दूसरा कोई भी सिम्टम ऐसी इस तरह का आता है तो उसको फिर हम लोग चेक कराते हैं। तो अभी तक टोटल हमारे जो है अभी तक मतलब ये जो अगस्त से 500 करीब तकरीबन हम लोगों ने टेस्ट किए हैं, इसमें से 50-60 आदमी अभी तक ये हुए हैं। तो उसमें ये ऐसा नहीं है कि वो कहीं पे, क्योंकि जैसे चैनल या मीडिया दूसरा दिखा रहा है, एकदम गलत है। तो आप अपने मीडिया माध्यम से ये चीज को क्लियर कर सकते हैं, और कोई भी दूसरा मीडियम अगर हमसे पूछना चाहे तो हम लोग उस चीज को क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इस टाइम क्या है कि इस तरह की जो खबरें चलती है एक पैनिक का आवाज करती है पब्लिक से उसमें, क्योंकि अंडरस्टूड है कि हमारे बड़ोदरा में 100 से ज्यादा केस भी नहीं आते पर डे, और अगर एक दिन का फिगर ये टोटल इंफॉर्मेशन जो है वो गलत है, रूमर है। हाँ जी एकदम करेक्ट, क्योंकि हमारे पर डे जब रेशो बड़ोदरा का 100 है तो अचानक अगर 119 एक जगह पे कहीं पे आ जाता है तो मीन्स वो एक समझ नहीं सकते कि इस तरह से वो कैसे कैरी कर लिया किसी ने, कोई सनसनी बनाने के लिए वो किया गया है आई थिंक। सो हमारी तरफ से क्लियर है और एकदम फैक्ट है, आप उस चीज को अपने हिसाब से ग्राउंड रियलिटी चेक कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीना जी, थैंक यू। जी धन्यवाद।
सुप्रीम कोर्ट में महानगर पालिका और नगर पालिका के चुनाव में एक वार्ड एक बैठक की मांग के साथ प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र रावत द्वारा रिट पिटीशन दायर की गई थी, जिसकी आज कोर्ट में फिर एक बार सुनवाई की गई। इस सुनवाई में सरकार द्वारा समय व्यतीत किया जा रहा होने के आरोप कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता नरेंद्र रावत ने लगाए हैं। गुजरातनी महानगरपालिका ने नगरपालिकाओं मल्टी मेम्बर वॉर्ड એટલે કે એક વોર્ડમાં 4 બેઠકોની સામે એક વોર્ડમાં એક બેઠકની પિટિશન અમે 2015માં દાખલ કરી હતી। આ વર્ષે 2020માં પણ એ જ પ્રકારની ચૂંટણી થવાની હતી, એ સમયે નવી પિટિશન પણ અમે દાખલ કરી હતી। આ બંને પિટિશનની સુનાવણી આજે રાખવામાં આવી હતી, પરંતુ ગઈકાલે ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી પંચ અને ગુજરાત સરકારે અમને પ્રશ્ન પૂછીને જવાબો ગઈકાલે મૂક્યા હતા। આ બાબતમાં આજે સુપ્રીમ કોર્ટે એવો નિર્ણય લીધો છે કે આના જવાબ અમારે આપવાના છે અને સાથે સાથે ફાઇનલ સુનાવણી જાન્યુઆરી પહેલાં એટલે કે ચૂંટણી પહેલાં થાય એવી તારીખ આપવાની વાત કરી છે। વાસ્તવિકતા એ છે કે 5 વર્ષની અંદર સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા અમને અમારી સુનાવણી થઈ નથી અને જ્યારે અમે છેલ્લા 3 મહિનાથી સતત 3 ડેટની અંદર ગુજરાત સરકાર અને રાજ્ય ચૂંટણી પંચને તક આપી હતી, પરંતુ એમના દ્વારા કોઈ પણ પ્રકારનો જવાબ આપવામાં આવ્યો નહીં અને ચૂંટણીમાં એક વોર્ડમાં 4 બેઠક રહે એ બાબતની એમની ગંદી ચાલના ભાગરૂપે એ લોકો સમય વ્યતીત કરવા માગે છે। છેલ્લા 3 તારીખોની અંદર એમને એક પણ પ્રશ્ન પૂછેલ નથી। ગઈકાલે જે એમને જવાબ માગ્યા છે એની અંદર પણ વાહિયાત દલીલો કરી છે। એમણે બહુ ચોંકાવનારી વાત એ કરી છે કે એક તરફ ગુજરાત સરકાર એવું કહે છે કે ગુજરાતમાં કોરોનાની બાબતમાં સબ સલામત છે, પરંતુ લેખિતમાં ગુજરાત રાજ્ય ચૂંટણી પંચે સુપ્રીમ કોર્ટને કીધું છે કે કોરોનામાં 29% જેટલો વધારો થયો છે અને જેના કારણે અમે 3 મહિના માટે ચૂંટણીઓ મોકૂફ રાખી છે। આવી દલીલ એક તરફ કરે છે, બીજી તરફ અમારી 2015ની પિટિશનમાં દર 5 વર્ષે ચૂંટણીઓ યોજાવી જોઈએ એ બાબતનો એમણે ઉલ્લેખ કર્યો કે આ વખતે 5 વર્ષે યોજાવાની નથી, જેથી અમને સ્ટે આપો, આવી વાહિયાત દલીલ પણ કરી છે। એટલે સ્પષ્ટ છે કે અમારી બંને પિટિશનમાં હારી જવાના બીકે જો હારી જાય તો ચૂંટણી એક વોર્ડમાં એક બેઠક થાય એ ઈચ્છતા નથી। એ ગુજરાતની ભારતીય જનતા પાર્ટીની સરકારને મદદ કરવા માગે છે કે એક વોર્ડમાં 4 બેઠક રહે અને આ સિસ્ટમ ભારતીય જનતા પાર્ટીને લાભદાયી છે, એ સ્પષ્ટ છે। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए VNM न्यूज और हाँ, VNM टीवी की YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसे प्रेस करते ही आपको मिलेगी VNM टीवी YouTube चैनल की सारी नोटिफिकेशंस और आप रहेंगे खबरों से अपडेटेड।